So now we are going to start with this exercise 9.2. Look at this question number 1 here. Let me explain this. Find the sum of the odd integer from 1 to 209. So first is 1, second odd integer की बात कर रहे हैं. Then next is 3, then next is 5 and so on. 2001, right? So it form an AP. Yes, so what is A in this case is 1 and common difference in this case is 2, right? And the last term in this case is 2001. So we need to find out Sn in this case. So Sn के लिए हमें n की requirement होती है. So for the formula of Sn we need n. So first of all let us apply the formula for An is equal to A plus n minus 1 into D. Yes, right. So first let us apply this formula, and after finding the value of n, तो then apply the formula for Sn. Sn is n by 2 a plus an. So इस फॉर्मूले में हमें चाहिए यहाँ पे a हमारे पास है, हमें चाहिए an मींस लास्ट टर्म हमारे पास है 1001 आ रहा है. ओके, लेट मी चेक इट. n यहाँ से फाइंड आउट करेंगे पहले हम लोग, और n चाहिए, n हमारे पास नहीं है, सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर. सो an is given 2001, a is 1, n minus 1 and d is 2. So ये इधर जाएगा तो it become 2000 divided by 2 is equal to n minus 1. So n is equal to 1001. Okay, now put it here. So we need Sn. Sn हमें चाहिए, तो it's 1001 divided by 2 and its a is 1 and an is 2001. So it's 1001 into, it's become divided by 1001. So if you multiply these numbers, it become 1002 1002 So this is the answer in this case. Yes, absolutely right. Okay. So I hope this question is clear to you. Now let's move to the next question. Look at this question number 2 here. Find the sum of all natural numbers lying between 10 and 1000 which are multiple of 5. So let me write the given data first. Sum of natural number lying between 100 और 1000 के बीच में, तो ये आता है 101 between numbers and which are multiple of 5 also. तो इनके बीच में आते हैं 101, 102, 103. So 105. Yes, 105. So this is the number in between 999. अब वहां पे सेकंड कंडीशन अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल ऑफ 5 भी होना चाहिए. तो 5 का मल्टीपल ये है नहीं है, ये है नहीं है, तो 105 इज द मल्टीपल ऑफ 5. एपी बनेगी 105. सर वो ए हो जाएगा. यस, 110 एंड 115 एंड सो ऑन. और लास्ट नंबर क्या आएगा इनके बीच में? 999. ये लास्ट नंबर है. इससे पहले मल्टीपल ऑफ 5 क्या आएगा? 995. अब इनका हमें सम फाइंड करना है. सो व्हाट इज ए इन दिस केस? 105. 105. डी हमारे पास 5. an is 995. So we need to find Sn. Again we need to find n. पहले हमें फाइंड करना होगा n, and then n हमें Sn के फॉर्मूले में यूज करना होता है, then Sn. So how to find n? We know we need to apply this formula, a plus n minus 1 into d. So put all the values in this formula by yourself. Put all the values in this formula by yourself and tell me the value of n. So n is 179. Okay. अपने नोटबुक पे रखें और फिर आप n को यहाँ पे n is after putting all the values an is equal to n is 179, right? Yes. Okay. Now then use this formula on your notebook and find the value of Sn. Tell me the value of Sn in this case. So 98450. It's 98450. Okay. So this is the final answer in this case. I hope this question is clear to you. Now let's move to the next question. Look at this question 3. In an AP, the first term is given. The sum of the first 5 terms is 1/4 the next 5 terms. So that 20th term is this. So let me write the given data first. तो पहले A is given 2
first term, and we need to show that, और हमें शो करना है A20 इज इक्वल टू -112। तो A20 फाइंड करने के लिए हम लोगों को रिक्वायरमेंट होती है A की, जो A हमारे पास है। नाउ वी नीड D, हमें D की और रिक्वायरमेंट है, बिकॉज वी नो दैट A20 इज इक्वल टू A प्लस 19D। सो अब A हमें रिक्वायरमेंट था A20 फाइंड करने के लिए, तो A हमें ऑलरेडी गिवन है, तो नाउ वी नीड टू फाइंड आउट दिस D। सो हाउ टू फाइंड आउट D? लुक एट द सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन इज फर्स्ट 5 टर्म का सम A1, A2, A3, A4 and A5. This sum is given is equal to 1/4, 1/4 of next 5 terms. So next 5 terms क्या होंगी? A6, A7, 8, 9 and 10। यहां से हमें D ऑब्टेंड होगा, राइट? बंद कर दे या बंद कर दे इसे? Okay, so from here we have obtained D. So put all the values here. What is A? A1 A होता है, A2 कितना होता है? A plus D, A3 होता है A plus 2D, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था when we were discussing the concept, A plus 3D and A plus 4D, right? And is equal to 1/4. And if you look at this A6, A6 क्या होगा? What is A6? A plus 5D। A7 क्या होगा? A plus 6D। A8 क्या होगा? A plus 7D and A plus 8D and A plus 9D, so like this. So what is A given in the question is, A is given 2, A2 है हमारे पास, तो ये 2 2 2 2, so 2 2 2 2 8, 5 बार आया, A आया 5 बार, तो 5 2 जा 10 आ गया। और यहाँ पे देखो D, एक D 3 3 3 6 6 plus 1 10, so 10D is equal to 1/4। यहाँ पे देखो A कितनी बार आएगा? यहाँ पे 5 टाइम्स, तो ये 10 होगा। और D कितनी बार आएगा? 5 plus 6 11 plus 7 18, 18 plus 8 26, 26 plus 9 35D। Now let's solve it. Multiply this with 40 plus 40D is equal to 10 plus 35D. Now shift this, it become 5D and it become minus 30. So the D comes out to be -6 in this case. So what is A20? So A20 हमें find करना है। A20 is A plus 19D। A कितना है? 2, 19 into, what is D? D is -6, so it's 2 minus 19 6 ja 114. 114, yes, so it comes out to be -112. So that is what we need to prove. So this is what we need to prove in this question. So we need to prove A20 is equal to -112. Yes, so I hope this question is clear to you.